Good evening, students. So today I'm going to continue the Payment of Gratuity Act 1972. So in my last class, we have already discussed this slide, eligibility for amount of gratuity. That means who are eligible to receive the amount of gratuity. किस किस को gratuity मिलेगा, ठीक है? An employee shall be eligible to receive gratuity if he has rendered the continuous service for not less than 5 years. That means सर्विस कितने इयर्स की देंगे एम्प्लॉय 5 years. लेस देन 5 years वाले को ग्रेचुइटी नहीं मिलेगा. सपोज अ पर्सन हैज जॉइंड अ कंपनी एंड इफ ही इज लीविंग अ कंपनी इन 4 years he will not be receiving the amount of gratuity. ठीक है, ये फर्स्ट हुआ. Second is on his superannuation. I've already told you what is superannuation. Superannuation is a time period which you have decided that when will you vacate the position in the organization, be it 10 years, 15 years, or after retirement. Your superannuation may be after retirement also. Okay, superannuation में क्या होता है? It is a contract type कि आप कब तक काम करोगे इस organization में. Okay, when you enter the organization, that time you decide. You may leave the organization after retirement or in between. Okay, so on his superannuation also he will receive the gratuity. On his retirement you all know it may be after 60 or 65 years of age, or resignation. Suppose if you are getting any good opportunity outside the company, suppose right now you are in one company and if you are getting good opportunity in some other company, that time you can resign, right? So when you are resigning, if you have already completed the 5 years of service, then you will be receiving gratuity. Okay, and इन केस ऑफ डेथ, डिसेबलमेंट एंड एक्सीडेंट. अब ये जो 3 केसेस है, डेथ, डिसेबलमेंट एंड एक्सीडेंट, इसमें क्या होता है? completion of 5 years is not necessary in case of death or disablement. Means अगर 5 साल कंप्लीट होने से पहले किसी की डेथ हो गई या किसी को एक्सीडेंट या कोई डिसेबलमेंट हुआ, तो इन दैट केस द 5 years थिंग इज नॉट कंसिडर्ड. ओके, विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. नाउ कमिंग टू ग्रेचुइटी शैल बी रिसीव्ड. अब ग्रेचुइटी रिसीव कौन करेगा? Gratuity shall be received by the employee nominee or the legal heirs of the employee. Suppose if you are leaving the organization after 5 years on your own wish, maybe by resigning or maybe after retirement, so in that case you yourself can receive the gratuity amount. आप खुद ले सकते हो gratuity amount. But in case of death or disablement or an accident, you may not be able to come yourself and receive the amount of gratuity. So इस केस में आप क्या करोगे? जब आप कंपनी ज्वाइन करते हो उस टाइम आप एक नॉमिनी देते हो कि आप अगर नहीं होते हो ग्रेचुइटी अमाउंट रिसीव करने के लिए, तो हु कैन रिसीव द ग्रेचुइटी ऑन बिहाफ ऑफ यू. इन दैट केस यू विल राइट द नेम ऑफ द नॉमिनी कि आपके थ्रू कौन ले सकता है, और द लीगल हेयर ऑफ द एम्प्लॉय. लीगल हेयर मतलब जो भी उसके वारिस है, जो भी उसके खानदान का वारिस है, वो ले सकता है. ओके, सो दिस वाज रिगार्डिंग द. Okay, so gratuity shall be received by the employee nominee or the legal heir of the employee. ठीक है, gratuity in अगर किसी की डेथ होती है या एक्सीडेंट या डिसेबलमेंट, इन दैट केस ग्रेचुइटी कौन रिसीव कर सकता है? आइदर एम्प्लॉय का नॉमिनी और द लीगल हेयर ऑफ द एम्प्लॉय. इफ द नॉमिनी और द लीगल हेयर इज माइनर, नाउ वन मोर केस इज देयर. अगर कोई भी नॉमिनी या लीगल हेयर माइनर है, दैट इज बिलो 18 years of age, then the amount shall be deposited with the controlling authority. So यहाँ पे एक important question बनता है कि in case of minor, where will the amount of gratuity be deposited? ठीक है, वो किसको दिया जाएगा? So it will be given to the controlling authority. ये आप बिल्कुल underline कर लो क्योंकि यहाँ से एक important question बनता है. ठीक है, and उसके बाद controlling authority will pay the amount to that particular nominee or the legal heir on the completion of 18 years of age. जब वो minor 18 years of age का हो जाएगा, that time the controlling authority will pay the amount to the minor. Okay, in case of death or disablement due to accident, continuous service for 5 years is not necessary, which I have already told you. Now coming to amount of gratuity in case of employee. Amount of gratuity in case of employee not covered under the Gratuity Act, monthly rated employee. See, यहाँ पे I am talking about monthly rated employee. मैंने last class में भी बताया था ये. The पता gratuity नहीं मैम, नेट चला गया था एकदम से, एग्जिट हो गया, सॉरी. कोई बात नहीं, no problem at all.
Okay, ma'am. The gratuity shall be payable at the rate 15 days wages for every completed years of service or part thereof in excess of 6 months. यहाँ पे क्या होता है कि इट इज अ सिंपल फॉर्मूला. आपको 15 डेज का एवरेज लेना है. 15/26, यू विल नॉट कंसिडर 30 days, यू विल ओनली कंसिडर 26 days into last drawn wages. आपका last drawn wages क्या था? Multiplied by number of completed years of service or part thereof in case of 6 months. Here there is an example given. Suppose there is a question: an employee retires from a factory after putting in 20 years of service. ठीक है? The last drawn wages by him per month before retirement was rupees 38,000. What is the amount of gratuity to be paid by his employer under the Payment of Gratuity Act 1972? यहाँ पे क्या है, आपको 20 years of service उसने किया था. कितने साल काम किए थे? 20 years काम किए थे. एंड व्हाट वाज हिज लास्ट ड्रॉन सैलरी? 38,000. वो लास्ट जब छोड़ा था उसने, तो लास्ट उसने ड्रॉ जो किया था दैट वाज 38,000 पर मंथ. ठीक है? उसके बाद आपको फॉर्मूला में 15 डेज का एवरेज डेज लेना है. सो 15/26 मल्टीप्लाइड बाय 38,000 इंटू 20, दैट इज अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी पेबल टू द एम्प्लॉयज विल बी 4,38,462. आई थिंक आई एम क्लियर हियर. ये सबसे सिंपल केस है जिसमें मंथली रेटेड एम्प्लॉय के लिए हम निकाल रहे हैं. ठीक है? अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ हो सकता है? सपोज इफ दे गिव यू 20 years 4 months, in that case what will be the time period you will be taking? Anybody? Can you all hear me? An employee, Yes, ma'am. yeah, can you tell me 20 years 4 months होगा तो what will be the number of years here you will be taking? 20 लेंगे मैम. Yes, you will be taking 20. और 20 years 6 months हुआ तो तब तो मैम 26 लेंगे. 20. 21 लोगे. इन दैट केस यू विल बी टेकिंग 21. यहाँ पे क्या है कि अगर 6 months का जो है 20 years 6 months हुआ, देन इन दैट केस यू विल बी कन्वर्टिंग टू 21 years. और 6 months से नीचे है तो फिर वो 20 में आ जाएगा. Am I clear here? Yes, ma'am. ओके. Yes, ma'am. ठीक है? इसमें ये एक चीज है. दूसरा आपने ध्यान देना है लास्ट ड्रॉन वेजेस कितना है, and 15/26 for the monthly rated. Now coming to in case of seasonal employment, seasonal employ अभी हमने जो किया this is for non seasonal. Okay, now when we come to seasonal employment, इसमें क्या होगा? At the rate of 7 days wages for each season, इसमें आप 7 days लोगे. Only the difference here is instead of taking 15 days, instead of taking 15, you will be taking 7. 7/26 into last drawn wages or salary into number of years, completed years. Okay, so यहाँ पे only seasonal में only the difference is आपने क्या करना है? 15 की जगह 7 लेना है. इसमें don't confuse yourself. You will be taking only 7 instead of taking 15. Okay, बाकी सब कुछ सेम होगा. इन द फर्दर क्लासेस हम एक दो न्यूमेरिकल कर लेंगे, उससे विल बी मोर क्लियर. ओके. नाउ कमिंग टू इन केस ऑफ पीस रेटेड एम्प्लॉय. पीस रेटेड एम्प्लॉय में क्या होगा? 15/26 into last drawn wages into number of completed years of service or part thereof in excess of 6 months. This means now piece rate. What is piece rate? Piece rate means number of quantities you have produced. You are not paid according to monthly basis. You are paid according to the number of pieces you have produced. Okay. So इसमें आपका last drawn wages आप निकालोगे कैसे? इसमें व्हाट यू विल डू इज आपने लास्ट 3 मंथ का एवरेज कितना रिसीव किया है उसका एवरेज निकालोगे. सपोज फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल आपने 10,000 किया, फॉर द मंथ ऑफ मे आपने 9,000 किया, एंड फॉर द मंथ ऑफ जून आपने 10,000 किया. सो व्हाट यू विल डू इज 10,000 प्लस 9,000 प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 3. क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वेजेस है ये फ्लक्चुएटिंग रहेगी बिकॉज दिस इज नॉट ऑन द मंथली बेसिस, दिस इज पीस रेटेड. सो योर सैलरी विल नॉट बी same every month. So in this case आप क्या करोगे? You will be taking out the average. So last drawn wages shall be computed by taking average of the total wages received for a period of 3 months immediately preceding the termination of employment. The wages paid for any overtime work shall not be taken. और कोई भी overtime work का wages है that will not be considered. Okay, so overtime wages is not included here. So I'm repeating it once again.
In the first case, I'm talking about the monthly rated employee. Here you will be taking 15 days wages for every completed years of service. Okay. So 15 by 26 into last drawn wages into number of completed years. This is the example here. And in case of seasonal employment, everything will be same. Only instead of 15, you replace 15 with 7. Okay. In case of piece rated employee, here you have to focus on the last drawn wages. You have to calculate the average of the total wages received for a period of 3 months. Okay, immediately preceding the termination of employment, and the wages paid for any overtime work shall not be taken. Am I clear here? Okay. Here you can see the calculation in case of seasonal establishment. Okay, if a seasonal employee retires after working from 2005 to 2015, working one season each year with rupees 10,000 basic and rupees 6,000 dearness allowance, his gratuity will be, देखो यहाँ पे क्या है कि आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया है. दे हैव नॉट गिवन यू द प्रॉपर ईयर. उन्होंने ये बताया है कि 2005 से लेके 2015 तक काम कर रहे थे. ठीक है. So the person is working for how many years? You will be including 2005 also. You will count this year also. So while counting from 2005 to 2015, the number of years will be 11 years. Okay. And the wages also includes basic and DA. So the last drawn wages will be 10,000 plus 6,000. Okay. This is basic plus DA, because wages will include DA also. Okay. So 7 by 26 instead of 15, because this is a seasonal establishment. So instead of 15, we will write 7 divided by 26 into last month salary drawn into number of service, that is 11 years, that is 47,385. Okay, from 2005 to 2015 is 11. Because it is seasonal, we have taken 7, and basic plus DA is 16,000. So we'll add it and then we will calculate it. Am I clear here in case of seasonal? Now, when we come in case of disabled employees, if an employee becomes disabled due to an accident or disease on work, he is re-employed on reduced wages on some other job, he shall be paid gratuity as on the basis of last drawn wages, on the basis of reduced wages. इसमें क्या होता है, disabled employee के case में what happens is, suppose an employee is working in the organization and he is disabled now. Suppose his one leg or hand is not working. So now he is not in a position to continue with the same work. In that case, the organization, they can offer him some another job which can be done by a disabled employee. Okay, उसको कोई हल्का काम दे सकते हैं जो वो कर सकता हो. In that case, हम जो एवरेज पे है वो कैसे निकालेंगे, अगर उसको उसी जगह पे री एम्प्लॉय किया गया ऑन द रिड्यूस्ड वेज. अब सपोज उसको काम भी कुछ हल्का दिया है तो ऑब्वियसली उसका वेज भी रिड्यूस हो जाएगा साइमल्टेनियसली. सो इन दैट केस वो क्या करते हैं, लास्ट ड्रॉन वेजेस कैसे निकालते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज पे ऑफ लास्ट ड्रॉन वेजेस एंड द basis of the reduced wages. इसके लिए in my next class I'll give you one example with the numerical. ठीक है. This time I think I did not bring numerical with this. So in the next class हम एक numerical करेंगे. With that you will be clear. ठीक है. Only the difference is आपको last drawn wages जो है, कितना आपको जब एक्सीडेंट या जो भी हुआ था जिसकी वजह से नाउ यू आर डिसेबल, उस टाइम आपने जो भी सैलरी विड्रॉ किया था और अब जो आप रिड्यूस वेज में जॉब कर रहे हो उसके एवरेज में आपको मिलेगा. ठीक है. नाउ कमिंग टू व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी. Maximum amount of gratuity, the standard limit of gratuity is rupees 20 lakh. Amendment of 2018. 2018 के amendment ने बताया है ये कि the maximum amount of gratuity is 20 lakh. Okay. Now, in case अब कब कब हम gratuity पे नहीं करते, why and when do you not pay the gratuity? ये तो आपको सबको पता है कि 5 years का continuous service नहीं होगा तो gratuity पे नहीं होगा. ठीक है. उसके अलावा इन केस एम्प्लॉय हैव बीन टर्मिनेटेड, अगर एम्प्लॉय को टर्मिनेट किया गया है फॉर इज एनी रियॉर्ड्स और डिसऑर्डरली कंडक्ट और एनी अदर एक्ट ऑफ वायलेंस, अगर उसने कोई बदमाशी की है, कोई वायलेंट एक्ट किया है विच इज अगेंस्ट द लॉ, इन कोई भी डिसऑर्डरली कंडक्ट किया है, इन दैट केस द एम्प्लॉय विल नॉट रिसीव द ग्रेचुइटी. The next one is of offense involving moral turpitude. Moral turpitude मतलब कोई भी काम जो कि moral उसके अंदर में नहीं आता, कोई भी बुरा काम अगर उसने कोई offense ऐसा किया है जिसमें उन्होंने आके
खिड़कियां तोड़ दी है या कोई नुकसान पहुंचाया है कोई फर्नीचर को या कुछ भी ऐसा किया है, in that case the person will not receive the gratuity. Or willful omission or negligence causing any damage or loss or destruction of the property belonging to the employer. Employer की कोई भी belonging को harm किया है, नुकसान किया है, in that case also a person will not receive the gratuity. तो कोई भी offense किया है, कोई भी बुरा काम करता है या फिर 5 साल उसका कंप्लीट नहीं होता, तो इन दैट केस द ग्रेच्युटी इज नॉट पेएबल एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी टू बी पेड इज 20 लाख आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2018. एंड द अमाउंट बिफोर 2018 का अमेंडमेंट इट वाज ओनली 10 लाख. 2018 के अमेंडमेंट से पहले जो अमाउंट था, मैक्सिमम अमाउंट जो पे कर सकते हो, दैट वाज 10 लाख ओनली. ओके, नाउ कमिंग टू द मोड ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी. अब आप ग्रेच्युटी कैसे कैसे पे कर सकते हो, ठीक है. इट शैल बी पेड इन कैश, आप कैश में पे कर सकते हो. इट शैल बी पेड बाय डिमांड ड्राफ्ट और बैंक चेक टू द एलिजिबल एम्प्लॉय, नॉमिनी और लीगल हेयर. आप डिमांड ड्राफ्ट से, बैंक चेक से, कैश से, और भी अभी बहुत सारे तरीके हैं पे करने के with the upcoming digital market. Okay, so all these things also will be included here as the case may be. एंड एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी कौन कौन ले सकता है, इधर एम्प्लॉय हिमसेल्फ ही विल टेक और हिज नॉमिनी विल टेक और हिज लीगल हेयर विल टेक. ठीक है, नॉमिनी और लीगल हेयर माइनर होगा तो फिर कंट्रोल अथॉरिटी को दिया जाएगा एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको देगा जब वो 18 ईयर्स का हो जाएगा. ठीक है. In case of death of the employee, gratuity payable to him should be paid to his nominee or as the case may be to the guardian of such nominee, which I have already discussed. If no nomination is made, then it should be paid to his heir. ये भी we have already discussed. Where, however, the employee, his legal heir or nominee so desires and the amount of gratuity is less than rupees 1000, payment may be made. अगर payment का जो amount है, it is less than 1000, ठीक है, in that case जो भी नॉमिनी या लीगल हेयर है, अगर वो चाहे तो उसको अमाउंट पोस्टल मनी से भी मिल सकता है, बाय पोस्टल दिस थिंग, बाय पोस्टल मनी ऑर्डर आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन. कमीशन डिडक्ट करके बाय पोस्टल मनी ऑर्डर भी वो डिमांड कर सकते हैं इफ द अमाउंट इज बिलो 1000. I'm repeating it once again. If the amount is below 1000, the legal heir or the nominee अगर चाहे तो वो पैसे मनी ऑर्डर के थ्रू भी ले सकता है, बट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन. ओके. डिटेल्स ऑफ पेमेंट शैल बी सेंट बाय द एम्प्लॉयर टू द कंट्रोलिंग अथॉरिटी. और जो भी वो पे कर रहा है उसका डिटेल्स कंट्रोलिंग अथॉरिटी को देना होगा. एंड इन केस ऑफ माइनर एंड अंटिल ही अटेन्स मेजोरिटी, it shall be deposited with controlling authority, which we have already discussed. So your maximum points has already been discussed. Only the thing is you have to remember the mode of payment. So mode of payment can be cash, demand draft, bank check, or any other mode, because of this upcoming digital market, many other modes are introduced. Okay. And it has to be paid to the employee, nominee, or the legal heir. If the amount is below 1000, then it can also be paid by money order, postal money order after deducting the commission. And details of the payment shall be sent by the employer to the controlling authority. Okay. Now the payment of gratuity amendment bill 2018 has been passed by Lok Sabha. जो ये अमेंडमेंट मैंने अभी कहा था 20 लाख का, दिस इज द डिटेल फॉर दैट ओनली. द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी अमेंडमेंट बिल 2018 has been passed by Lok Sabha on 15th March 2018 and by Rajya Sabha on 22nd March 2018, has been brought in force on 29th March 2018. ठीक है, दिस ऑल आर द डेट्स. द प्रेजेंट अपर सीलिंग ऑन ग्रेच्युटी अमाउंट रेज टू 20 लाख फ्रॉम रुपीज 10 लाख. पहले 10 लाख था, बट आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2018 इट हैज बीन रेज्ड टू 20 लाख. इसी के टाइम पे ही मैटरनिटी लीव जो है ये भी यहाँ पे एप्लीकेबल हुआ था. ग्रेच्युटी के केस में मैटरनिटी लीव फॉर वुमेन एम्प्लॉयज एक्सटेंडेड टू 26 वीक्स फ्रॉम 12 वीक्स. ओके. Now coming to compulsory insurance. This is also important topic here in the gratuity. एक लाइन में समझना है तो इसमें क्या है कंपल्सरी इंश्योरेंस अंडर सेक्शन 4A. इसमें जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर विल पे द ग्रेच्युटी अमाउंट टू द एम्प्लॉय. ओके. अब वो कहाँ से पे करेगा? दे कैन नॉट पे इट फ्रॉम देयर ओन फंड. ओके. वो कहाँ से पे करेगा? फॉर दैट गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि फॉर दैट पर्पस द एम्प्लॉयर हैज टू ओपन
द LIC अकाउंट, ठीक है, इंश्योरेंस लेना होगा उनको, दे हैव टू टेक द इंश्योरेंस फॉर हिज लायबिलिटी फॉर पेमेंट्स। जो पेमेंट की लायबिलिटी है उस चीज के लिए जो एम्प्लॉयर है उसको क्या लेना होगा, इंश्योरेंस लेना होगा फ्रॉम द LIC। See, every employer other than an employer or an establishment belonging to or under the control of the central government or state government, कोई भी employer या कोई भी establishment but other than the central government or the state government, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को छोड़ करके बाकी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट में एम्प्लॉयर को क्या करना होगा, दे हैव टू ऑब्टेन द इंश्योरेंस, उनको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा कि उनको पे करना है, जो अमाउंट ग्रेच्युटी का पे करना है उनके नाम से एम्प्लॉयर को इंश्योरेंस लेना होगा फ्रॉम द LIC। ठीक है, ये आपको एकदम याद रखना है। उसके बाद अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो किस किस केस में इंश्योरेंस, LIC से इंश्योरेंस लेना एग्जेम्प्ट कर सकता है। अगर किसी एम्प्लॉय ने अपना अलग से फंड अप्रूव किया है, ग्रेच्युटी फंड, देयर इज अ फंड नेम्ड ग्रेच्युटी फंड, अगर एम्प्लॉयर ने अपना ग्रेच्युटी फंड खोला है, अगर एम्प्लॉयर ने अपना ग्रेच्युटी फंड खोला है और उस ग्रेच्युटी फंड में वो पैसे डाल रहे हैं, इन दैट केस द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट विल एग्जेम्प्ट, ओके। And any employer employing 500 or more persons who establishes an approved gratuity fund in the manner prescribed, इसमें क्या होगा, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन, अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी को पे करने के लिए जो भी एस्टेब्लिशमेंट है अदर देन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उनको LIC से इंश्योरेंस कराना होगा। बट कोई कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें LIC से इंश्योरेंस लेना एग्जेम्प्ट हो सकता है। वो है अगर कोई एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी फंड बनाए अपना जिसमें वो पैसे डाल रहे हो, या फिर कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 500 और मोर पर्सन एम्प्लॉयड है, वो लोगों ने क्या किया है, दे हैव अप्रूव्ड द ग्रेच्युटी फंड, उन्होंने एक ग्रेच्युटी फंड अप्रूव करवाया है अकॉर्डिंग टू द मैनर प्रिस्क्राइब्ड, रूल्स को फॉलो करते हुए उन्होंने एक ग्रेच्युटी फंड बनाया है, तो इन दैट केस दे डोंट हैव टू टेक द इंश्योरेंस। Every employer shall within such time as may be prescribed get his establishment registered, और इस चीज के लिए उनको क्या करना होगा, अपने establishment को they have to register with the controlling authority। ठीक है, the appropriate government may provide for the constitution of the board of trustees of the approved gratuity fund। अगर कोई भी gratuity fund अप्रूव किया है तो इन दैट केस अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो लोग क्या कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, दैट मीन्स दे कैन मेक अ बोर्ड, ओके। बोर्ड किसका, बोर्ड ऑफ द ट्रस्टीज, जो इस चीज को देख सके, जो इस चीज को मॉनिटर कर सके। ठीक है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में प्रोवाइड फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, ओके। नाउ कमिंग टू for recovery, kahan gaya title, just a minute, I think I've missed one slide here or what. Okay, for the recovery by the controlling authority of the amount of gratuity payable where an employer fails to make payment by way of premium to the insurance, he shall be liable to pay the amount of gratuity due under this act including interest if any for delayed payments forthcoming to the controlling authority। अगर यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयर फेल करता है पे करने में, दैट मीन्स इफ द एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, अगर प्रीमियम के पैसे वो इंश्योरेंस में नहीं डाल रहे हैं, वेयर एन एम्प्लॉयर फेल्स टू मेक पेमेंट बाय वे ऑफ प्रीमियम टू द इंश्योरेंस, ही शैल बी लायबल टू पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी ड्यू अंडर दिस एक्ट। अगर प्रीमियम फेल करता है एम्प्लॉयर पे करने में, तो इन दैट केस उसको क्या करना होगा, इंटरेस्ट के साथ अपने डिलेड पेमेंट पे करना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ उसको पे करना ही होगा टू द कंट्रोलिंग ऑथोरिटी। ठीक है, शैल बी पनिशेबल, और अगर उसने वो चीज को रिपीट किया, नहीं पे करता है वो प्रीमियम, तो इन दैट केस ही विल बी paying fine which may extend to 10,000 rupees in the case of a continuing offense, with a further fine which may extend to 1,000 for each day during which the offense continues। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर एम्प्लॉयर प्रीमियम पे नहीं करता कोई कारण से, इफ ही फेल्स टू मेक द पेमेंट, ओके, इन दैट केस ही हैज टू पे इट लेटर ऑन टू द कंट्रोलिंग ऑथोरिटी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ओके। एंड अगर वो फेल आगे भी अगर वो कंटिन्यू करता है तो ही विल बी पनिशेबल विथ अ फाइन विच मे बी 10,000 रुपीज, एंड अगर कंटिन्यू करा उस चीज को तो फिर 1,000 पर डे
ऑफेंस ऑफेंस कंटिन्यू अगर होता है तो 1000 पर डे उसको और पे करना होगा, ठीक है। नाउ कमिंग पावर टू एग्जेम्प्ट। अब मैंने हर एक्ट, जो भी एक्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, मैंने हर बार ही कहा है कि कुछ चीजें गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर सकती है कुछ केसेस में, ठीक है। सो पावर टू एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 5, the appropriate government may exempt any establishment, factory, mine, oil field, plantation, port, railway company, or shop to which this act applies from the operation of the provision of this act if employees are in receipt of gratuity or pensionary benefits not less favorable than the benefits conferred under this act. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या है, कुछ कंपनीज को, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कुछ कंपनीज को, कुछ एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर सकती है कि वो ग्रेचुइटी का अमाउंट उनको पे ना करें। इन विच केसेस, अगर एम्प्लॉयज को सेम अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी कोई और पेंशनरी बेनिफिट के थ्रू मिल रहा है, which is not less favorable than the benefit conferred under this act. Okay, which is not less favorable, which is not less favorable than the benefits conferred under this act. गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट सर्टेन एस्टेब्लिशमेंट, क्यों एग्जेम्प्ट कर सकता है, अगर एम्प्लॉयज को कोई और पेंशनरी बेनिफिट मिल रहा है जो कि ग्रेचुइटी के वो अमाउंट से ज्यादा अच्छा है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। द अमाउंट शुड नॉट बी लेस देन दैट। ओके, इन दैट केस द गवर्नमेंट कैन एग्जेम्प्ट। एंड कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉमिनेशन अंडर सेक्शन 6। ईच एम्प्लॉय, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करेगा, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस, 1 साल का सर्विस कंप्लीट करने के बाद उसको अपने फॉर्म में नॉमिनेट करना ही होगा कि उसके अगेंस्ट में हु इज गोइंग टू रिसीव द ग्रेचुइटी। Each employee who has completed 1 year of service shall make within such time, in such form, and in such manner as may be prescribed, make nomination. An employee may, in his nomination, distribute the amount of gratuity payable to him under this act amongst more than one nominee. ठीक है, वो मोर देन वन नॉमिनी को नॉमिनेट कर सकता है जो उसके बिहाफ में अमाउंट रिसीव करेगा, और ये उसको कब करना है, आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस। 1 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीट करने के बाद उसने अपने नॉमिनी को, जिसको भी उसने नॉमिनी बनाना है, उसका नाम उसने फॉर्म में भरना ही भरना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट नॉमिनेशन, एंड विद दिस आई विल कंक्लूड द क्लास टुडे। आई होप you all are clear, and if any doubts we can clear in the next class. Till then, thank you so much. I want you all to revise it, and we will clear the doubts in the next class, right? Thank you, ma'am.